नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्विज सीरीज़ में आज हम इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री बेसिकली चाइना और पाकिस्तान का बारे में सीखेंगे। तो आइए क्विज शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस ऑन न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। लेट्स सी व्हाट कैन बी द राइट आंसर। यस, इट इज वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट वाज द मेन मोटो ऑफ GLF. So let's go for next question. In terms of the sectoral contribution to GDP, economy of India and Pakistan are now relying more on primary sector, secondary sector, both primary and secondary sector, और tertiary sector. तो किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था इंडिया एंड पाकिस्तान? सो लेट्स सी दिस वन, व्हाट इज द राइट आंसर? यस, इट इज टर्शियरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया इंडिया ने, ओके, अलॉन्ग विथ पाकिस्तान ऑल्सो. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन बट इट इज रिलेटेड टू चाइना ओनली. In which sector China has given importance? Primary, tertiary, secondary or none of these. तो क्या लगता है कौन सा हो सकता है? Yes, आपका गेस सही है. That is secondary sector. So that's why China has given emphasis on secondary sector, यानी manufacturing sector. So Chinese products are available all over world. So let's go for next question. Which of the following countries resorted to one child policy? डेफिनेटली ये आपको शायद आता होगा, डेफिनेटली आता है. सो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नन ऑफ दिस. यस, लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, यू आर राइट ओनली. दैट इज नन अदर देन चाइना. ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? Number A, India, Pakistan, China, none of these. So let's see the right option. क्या लगता है आपको? Yes, it is Pakistan. Growth rate means difference between death rates and birth rates. ठीक है, एक साल में कितना पैदा होता है और कितना का डेथ होता है. That is difference is called growth rate. Then which of the following countries has the lowest density of population? So let's see the option. India, China, Pakistan, and none of these. So let's see the right option. Yes, friends, your guess is right. That is China. As China is a large country compared to India and Pakistan, so obviously density, मतलब density यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितना पॉपुलेशन रहता है. ओके, सो चाइना इज लोएस्ट. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलाइड अपॉन मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस. यस, what is the right option? It is mixed economy, neither capitalist nor socialist together. दोनों को मिक्स करने से जो होता है that is called mixed economy. That is capitalist as well as socialist economy is called mixed economy. So let's go for next question. When did China implement its first 5-year plan? 1950, 1951, 1952, 1953. So let's see the right option. Yes, right option is, yes, it is 1953. First 5-year plan China has adopted. So let's go for next question. When were economic reforms introduced in China? 1970, 1953, 1962, 1978. So what can be the right option? So let's see. Right option is, it is, yes, 1978. So let's go for next question.
a similar question, but it is related to Pakistan. So, which year Pakistan has adopted? 1978, 1988, 1991, 1998. So, let us see the right option. Yes, it is 1988. यानी चाइना ने जब लिया आफ्टर 10 years. So, exactly after 10 years, Pakistan has adopted. Which of the following countries has the highest fertility rate? India, China, Pakistan, both A and B. क्या लगता है दोस्तों? What is the right option? Fertility rate यानी one woman how many children is expected to give in her life, that is called fertility rate. ठीक है? So yes, it is Pakistan. So let's go for next question. Which of the following is an indicator of human development? Life expectancy at birth, maternal mortality rate जो मदर का डेथ होता है, that is infant mortality rate यानी below 1 years of age, and all of this. Okay, so let's see the right option. Yes, it is all of these. So let's go for next question. Which of the following factors led to re-emergence of poverty in Pakistan in 1990s? Exports of highly volatile agricultural product, political instability, growing dependence on foreign loans, all of these. ज़्यादा पॉवर्टी होने का कारण क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? यस, ऑल ऑफ दिस. यही गेस किए थे ना. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following factors make FDI, foreign direct investment, an important source of economic growth? It increases unemployment. It leads to an increase in imports. It increases non-debt financial resources. It reduces exports. So let's see the right option. Yes, it is. It increases non-debt financial resource. Non-debt financial resource यानी जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हम we need to return it along with rate of interest. Okay, तो जब भी फॉरेन से पैसा आता है तो उसमें कोई लोन वगैरह नहीं है, so that is called non-debt financial resource. Okay, so let's go for next question. When did India implemented its first 5-year plan? 1951, 1952, 1947, 1950s. So let's see the right option. कब लिया था इंडिया ने फर्स्ट 5-year plan? Yes, you are right. It is 1951. थैंक यू. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में.